अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम पावर रिसोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हमने पावर रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन बताई है। पावर रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज़ कन्वेंशनल पावर रिसोर्स एंड नंबर टू इज़ नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स। कन्वेंशनल पावर रिसोर्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। उसमें आया फायरवुड और फॉसल फ्यूल्स, तो उसको कंप्लीट हमने उसमें डिस्कस किया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स आर दोज पावर रिसोर्सेज which are renewable or inexhaustible in nature। वो पावर रिसोर्सेज, वो एनर्जी रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है, रिजेनरेबल है, उनको हम नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कहते हैं। हाँ, तो इन पावर रिसोर्स को हम रिजेनरेट कर सकते हैं सो दैट वी कैन कंटिन्यू हार्नेस एंड यूज दीज पावर और एनर्जी रिसोर्सेज। Conventional, non-conventional power resources are also called as alternative forms of energy. There are various types of these alternative forms of energies. Number one is nuclear power or nuclear energy. Now, what is this nuclear energy? Nuclear power or nuclear energy is obtained from the radioactive elements such as thorium, uranium. These radioactive elements naturally undergo nuclear fission reactions that generate tremendous amount of the energy, and this nuclear fission reaction can be carried out under controlled condition in the nuclear reactors, so that this amount of the energy, this tremendous amount of the energy that is released during the fission, nuclear fission of the uranium or the thorium or other radioactive elements for the generation of the electricity. Such power stations or energy stations in which we utilize the nuclear energy to generate the electricity are called as nuclear power stations or nuclear power plants. Number two is solar energy. Solar energy, since we know the sun is the ultimate source of the energy in this world, so this sun's energy can be trapped and converted into different forms of the energy by means of the photovoltaic cells or solar cells, which are made up of silicon। फोटोवोल्टिक सेल्स एक डिवाइस होता है जिनके जरिए हम सन की एनर्जी, सूरज की एनर्जी जो होती है वो हम ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, चाहे हीट में, लाइट और इवन इन द इलेक्ट्रिसिटी। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। चूंकि सन हमेशा हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हम इस एनर्जी को कंटिन्यूली हार्नेस और यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास सोलर लैंटर्न्स होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर गीजर्स एंड हीटर्स होते हैं। ऑल दीज वर्क ऑन द सन्स एनर्जी। नाउ नंबर थर्ड इज विंड एनर्जी। नाउ व्हाट इज विंड? विंड होता क्या है? जो ब्लोइंग एयर जो होता है उसको हम विंड कहते हैं। उसकी जो स्पीड होती है चलने की, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज यूज्ड आर फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी और सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ द विंड मिल्स। विंड मिल क्या होती है? इसमें एक ब्लेड्स होते हैं। विंड मिल, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ब्लेड्स and these are now connected to a rod or axle, and this axle is now connected to a generator. The wind moves these blades through its kinetic energy. This kinetic energy is reaches to the air generator, where this kinetic energy of the wind is converted into the electricity. These windmills or open a collection of the windmills, a large number of the collection of the windmills operating together is called wind farming. It is an alternative source of the energy which can be harnessed for the production of the electricity or grinding the grains, etc. The main drawback of the wind energy or the electricity produced from the wind is that the wind is variable in its intensity, place and time. That means
ये जो विंड होता है ये हर जगह एक जैसा नहीं होता है, दैट मीन्स इट वेरीज इन प्लेस। ये हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, दैट मीन्स इट वेरीज इन टाइम। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, दैट मीन्स इट वेरीज इन इंटेंसिटी। दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द विंड एनर्जी। नाउ थर्ड इज the fourth part of this non-conventional energy is that is the geothermal energy. Since we know that our earth is heated up inside it, this internal heat or the heat of the interior of our earth is utilized as a main source of the energy. This type of the energy is called as geothermal energy. The energy which is produced within the earth or interior of the earth can be harnessed for the production of the electricity, for the production of the heat, for the production of the light. Such types of the energy is called as geothermal energy. The best example of the geothermal energy that we get from the hot springs. These hot springs are and best examples of the geothermal energy which can we use for cooking purposes, heating purposes, as etc. Now the another type of the non-conventional energy is tidal energy. Tidal energy, it is the energy of the high tides that is used for the generation of the heat or the electricity. Now the another type of the non-conventional energy, that is biogas. Bio means living gas. तो बायोगैस वो गैस है, वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम हासिल करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इट इज प्लांट वेस्ट, it is farm waste, it is animal waste such as dung etc., or the rotten vegetables, fruits etc., that we digest in anaerobic digesters. Anaerobic digesters in which there are certain microorganisms, for example methanogen organisms are there, which convert this waste material products into a gas called as biogas. This biogas is directly utilized for the cooking purposes, heating purposes, and can be even used for rotating and the rotors to generate the electricity. तो हम अभी रिकैप करेंगे आज का जो लेक्चर रहा है वो हमारा था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और पावर रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स हमने वो रिसोर्सेज बताए हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल और अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है न्यूक्लियर पावर जो हम हासिल करते हैं दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। नंबर सेकंड सोलर एनर्जी, उसकी हम हासिल करते हैं डायरेक्टली सन एनर्जी से विद द हेल्प ऑफ द फोटो इफेक्ट फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर सेल्स। देन थर्ड विंड एनर्जी, इट इज obtained from the kinetic energy of the wind. Geothermal energy, the energy obtained from the interior of the earth. And then tidal energy, the energy obtained from the high tides. And then last the biogas, which is obtained from the organic waste matter. I think it is sufficient for today's lecture. Thank you.